अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की इंग्लिश के लेसन नंबर 13 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, ये आंसर मैंने सनशाइन से लिए हैं। इस वीडियो का मकसद उन बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद कराना है जिनको इंग्लिश याद नहीं होती है, याद करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, या याद तो कर लेते हैं लेकिन जल्द भूल जाते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के सुनने के बाद आपको बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप देर तक भूलेंगे भी नहीं। इसका तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा अब दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए, अब वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार मुकम्मल चैप्टर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें। इंशाल्लाह उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कहता है व्हाट आर दी एंटीसेप्टिक्स। कहता है एंटीसेप्टिक्स क्या है, जरासीम कुछ अद्वियात क्या है, एंड व्हाट इज द एंटीसेप्टिक मेथड, और एंटीसेप्टिक मेथड क्या है। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस, दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट किल जर्म, दैट किल जर्म, दैट किल जर्म। दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस, दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस। एंटीसेप्टिक का लफ्ज़ सवाल में भी है। कहता दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस, दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस। कहता जो एंटीसेप्टिक्स है, जरासीम कुछ अद्वियात हैं, आर द सब्सटेंसेस ये वो मादे हैं, दैट किल जर्म, दैट किल जर्म जो जरासीम को मार देते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट किल जर्म, दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट किल जर्म, दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट किल जर्म। क्या कहता है, दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस, दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट किल जर्म्स, दैट किल जर्म्स, दैट किल जर्म्स, दैट किल जर्म्स। क्या कहता है, दी एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंसेस, the antiseptics are the substances that kill germs, that kill germ, the antiseptics are the substances 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 that kill germ। the use of these substances, the use of these substances, the use of these substances कहता है इन मादों का इस्तेमाल, the use of these substances, 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 the use of these substances to kill germs, to kill germs, to kill germs, the use of these substances 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 to kill germ। क्या कहता है, the use of these substances to kill germs, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method, is called antiseptic method, is called antiseptic method, is called antiseptic method, एंटीसेप्टिक मेथड ये लफ्ज़ सवाल में भी है। is called antiseptic method, the use of these substances, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method, is called antiseptic method, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method। the use of these substances, the use of these, the use of these substances to kill germ, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method, is called antiseptic method, is called antiseptic method। क्या कहता है, the use of these substances, the use of these substances to kill germ, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method, the use of these substances to kill germ is called antiseptic method। क्या कहता है,
Antiseptics are the substances. Antiseptics are the substances that kill germ. Antiseptics are the substances that kill germ. The use of these substances to kill germ is called antiseptic method. The use of these substances to kill germ is called antiseptic method. क्या कहता है? Antiseptics are the substances that kill germ. Antiseptics are the substances that kill germ. The use of these substances to kill germ is called antiseptic method. Is called antiseptic method. क्या कहता है? The use of these substances to kill germ is called antiseptic method. दोबारा पढ़ते हैं, फिर अगला पढ़ेंगे. The antiseptics are the substances that kill germ. The antiseptics are the substances that kill germ. The use of these substances to kill germ is called antiseptic method. अगला सवाल है, कहता है what was the chief defect of the antiseptic method. कहता है जो एंटीसेप्टिक मेथड है उसका चीफ डिफेक्ट क्या है, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है. तो जवाब पढ़ते हैं. कहता दी एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म. दी एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म. कहता जो एंटीसेप्टिक मेथड था वो जरासीम को तो मारता ही था. द एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म्स. किल्ड जर्म. किल्ड जर्म्स. एंटीसेप्टिक मेथड का लफ्ज सवाल में भी है. कहता दी एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म. किल्ड जर्म्स. किल्ड जर्म. दी एंटीसेप्टिक मेथड. दी एंटीसेप्टिक मेथड killed germs. Killed germ. Killed germ. The antiseptic method killed germs. The killed germs. Killed germs. The antiseptic method killed germs. The antiseptic method killed germs. यहाँ पर पूरे सवाल में जहाँ भी जर्म का लफ्ज़ आया उसके साथ एस लगा हुआ है, जर्म्स, क्योंकि ज़्यादा जहाँ भी जिक्र आ रहा है ज़्यादा जरासीम का, तो ये ज़हन में रखना है. दी एंटीसेप्टिक मेथड क्या कहता है? दी एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म. दी एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म्स. 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 बट इट आल्सो डिस्ट्रॉय. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड. लेकिन इसने तबाह कर दिया द वाइट सेल ऑफ द बॉडी. द वाइट सेल ऑफ द बॉडी. द वाइट सेल ऑफ द बॉडी. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द वाइट सेल ऑफ द बॉडी. डिस्ट्रॉय के साथ में ईडी लगा हुआ है, ठीक है. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द व्हाइट सेल ऑफ द बॉडी. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द व्हाइट सेल ऑफ द बॉडी. But it also destroyed the white cell of the body. But it also destroyed. But it also destroyed. But it also destroyed the white cell of the body. The white cell of the body. The white cell of the body. But it also destroyed the white cell of the body. But it also destroyed the white cell of the body. But it also destroyed the white cell of the body. But it also destroyed the white cells of the body. सेल का भी लफ्ज़ यहाँ पे पूरे जो आपका बाब है, इस चैप्टर है, इसमें आ रहा है, तो सेल के साथ भी एस लगा हुआ है, ठीक है, याद रखना है. ज़्यादा सेल्स मुराद हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी में तो जब भी मुराद होता है तो ज़्यादा सेल ही मुराद होते हैं. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द वाइट सेल ऑफ द बॉडी. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द वाइट सेल ऑफ द बॉडी. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द वाइट सेल ऑफ द बॉडी. दोबारा पढ़ते हैं. एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म. द एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म. बट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड द वाइट सेल ऑफ द बॉडी. बट इट also destroyed the white cell of the body. क्या कहता है? एंटीसेप्टिक मेथड killed germ. Antiseptic method killed germ, but it also destroyed. But it also destroyed the white cell of the body. The white cell of the body. The white cell of the body. But it also destroyed the white cells of the body. The white cells of the body. But it also destroyed the white cell of the body. क्या कहता है? Antiseptic method killed germ. Antiseptic method killed germ, but it also destroyed the white cells of the body. आगे क्या कहता है? This was the chief defect of the antiseptic method. This was the chief defect of the antiseptic method. Chief defect of the antiseptic method. Antiseptic method, chief defect of the antiseptic method. ये जो लफ्ज़ है ना, चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड, ये आपके सवाल में भी है. आपको बस इतना भी याद कर लें, दिस वाज, ये भी काफ़ी है इस सेंटेंस में. दिस वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड, लेकिन फिर भी याद कर लें तो बेहतर है पूरा सेंटेंस ही. This was the chief defect of the antiseptic method. This was the chief defect of the antiseptic method. This was the chief defect of the antiseptic method. क्या कहता है? This was the
चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड। दोबारा पढ़ते हैं, एंटीसेप्टिक मेथड किल्ड जर्म, एंटीसेप्टिक मेथड killed germ, but it also destroyed the white cells of the body, ठीक है। This was the chief defect of the antiseptic method, क्या कहता है? The antiseptic methods killed germ, the antiseptic method killed germ, but it also destroyed the white cells of the body, this was the chief defect of the antiseptic method। क्या कहता है? The antiseptic method killed germ, but it also destroyed the white cell of the body, this was the chief defect of the antiseptic method। क्या कहते हैं? The antiseptic method killed germ, but it also destroyed the white cell of the body, this was the chief defect of the antiseptic method। अगला सवाल है, कहता है what part is played by the white cell in the blood of a human body। कहता है इंसानी जिस्म के खून में जो सफ़ेद खुलियाँ हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं? तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body। कहता है white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, white cells are the डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी। कहता है जो वाइट सेल हैं वो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वाइट सेल्स आर द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी, वाइट सेल्स आर द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी। क्या कहता है? वाइट सेल्स are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body। क्या कहता है? white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, defense system of a body, defense system of a body। कहता है जो white cell है इंसानी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, white cells are the defense system of a body। when germs enter a body, when germs enter a body, white cell attack them, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them। क्या कहता है? when germs enter a body, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them। क्या कहता है? when germs enter a body, white cell attack them। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body। when germs enter a body, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them, white cells attack them, when germs enter a body, white cell attack them। क्या कहता है? white cells are the defense system of a body, defense system of a body, when germs enter a body, white cell attack them। आगे क्या कहता है? कहता है disease is in fact a fight between them, disease is in fact a fight between them, disease is in fact a फाइट बिटवीन देम। कहता है जो बीमारी है वो असल में तो इन दोनों की लड़ाई है, किसकी? जरासीम की और सेल्स की। कहता है जो बीमारी है वो तो जरासीम और सेल्स की लड़ाई का नाम है। डिजीज इज इन फैक्ट a fight between them, disease is in fact a fight between them, disease is in fact a fight between them, disease is in fact a fight between them, fight between them, fight between them, fight between them। disease is in fact a fight between them, 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 disease is in fact a fight between them। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, when germs enter a body, white cell attack them, when germs enter a body, white cell attack them, disease is in fact a fight between 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 them। दोबारा पढ़ते हैं।
कहता white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, ठीक है जी। when germs enter a body, white cell attack them, disease is infecta, fight between them। आगे क्या कहता है, when the white cell kill the germ, when the white cell kill the germ, when the white cell kill the germ, when the white cells kill the germ, when the white cell kill the germ, कहता जब वाइट सेल जरासीम को मार देते हैं, when the white cells kill the germs, when the white cells kill the germs, when the white cell kill the germ, when the white cell kill the germ, the patient is recovered, the patient is recovered, the patient is recovered, the patient is recovered, the patient is recovered। जो पेशेंट होता है रिकवर हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, the patient is recovered। कहता है जब वाइट सेल जरासीम को तबाह कर देते हैं, मार देते हैं, तो पेशेंट क्या हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। when the white cell kill the germ, the patient is recovered, when the white cell kill the germ, the patient is recovered, when the white cell kill the germ, the patient is recovered, when the white cell kill the germ, the patient is recovered, the patient is recovered, the patient is recovered, when the white cell kill the germ, the patient is recovered, when the white cell kill the germ, the patient is recovered। दोबारा पढ़ते हैं, कहता white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, when germs enter a body, white cell attack them, disease is in fact a fight between them, when the white cell kill the germ, the patient is recovered, क्या कहता है, white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, white cells are the defense system of a body, when germs enter a body, ठीक है जी, when germs enter a body, white cell attack them, ठीक है जी। disease is in fact a fight between them, ठीक है जी। when the white cell kill the germ, when the white cells kill the germ, the patient is recovered, दोबारा पढ़ते हैं, कहता white cells are the defense system of a body, ठीक है। when germs enter a body, white cell attack them, disease is in fact a fight between them, ठीक है जी। when the white cell kill the germ, the patient is recovered, जल्दी से पढ़ते हैं, white cells are the defense system of the body, white cells are the defense system of a body, when germs enter a body, white cell attack them, ठीक है जी। आगे क्या है, disease is in fact a fight between them, when the white cell kill the germ, the patient is recovered, white cells are the defense system of a body, when germs enter a body, white cell attack them, disease is in fact a fight between them, when the white cell kill the germ, the patient is recovered। अगला सवाल है, कहता give an account of the early life of Fleming, कहता जो फ्लेमिंग की इब्तदाई जिंदगी है उसको बयान करें, तो जवाब पढ़ते हैं, कहता Fleming was born on a farm near Darwell, 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 Fleming was born on a farm near Darwell। कहते जो फ्लेमिंग है वो एक फार्म पर पैदा होता है जो डार्वेल के करीब है। फ्लेमिंग was born on a farm near Darwell, Fleming was born on a farm near Darwell, Fleming was born on a farm near Darwell, Fleming was born on a farm near Darwell, on August 6, 1881, on August 6, 1881, 6 अगस्त 1881 को, on August 1881, on August 1881, Fleming was born on a farm, Fleming was born on a farm, Fleming was born on a farm near Darwell, Fleming was born on a farm near Darwell, on August 6, 1881, Fleming was born on a farm on August 6, 1881, ठीक है। क्या कहता है, फ्लेमिंग वाज बोर्न ऑन अ फार्म नियर डार्वेल, फ्लेमिंग वाज बोर्न ऑन अ फार्म नियर डार्वेल ऑन अगस्त 1881, फ्लेमिंग वाज बोर्न ऑन अ फार्म
ठीक है। फ्लेमिंग वाज बोर्न ऑन अ फार्म नियर डार्वेल ऑन अगस्त 6 1881। फ्लेमिंग वाज बोर्न ऑन अ फार्म ऑन अगस्त 6 1881। आगे क्या कहता है? ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द विलेज स्कूल। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द विलेज स्कूल। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द विलेज स्कूल। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द विलेज स्कूल। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द विलेज स्कूल। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द village school. He got his early education in the village school. In the village school. In the village school. In the village school. He got his early education in the village school. He got his early education in the village school. क्या कहता है? Fleming was born on a farm. Fleming was born on a farm near Darwell on August 6 1881. Fleming was born on a farm near Darwell on August 6 1881. On August 6 1881. He got his early education in the village school. He got his early education in the village school. He got his early education in the village school. क्या कहता है? Fleming was born on a farm near Darwell on August 6 1881. He got his early education in the village school. आगे क्या कहता है? At 10 he went to Darwell school. At 10 10 साल की उम्र में he went to Darwell school. 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 क्या कहता है? Fleming was born on a farm near Darwell. Fleming was born on a farm near Darwell on August 6 1881. ठीक है। He got his early education in the village. He got his early education in the village. At 10 he went to Darwell school. At 10 he went to Darwell school. At 10 he went to Darwell school. क्या कहता है? Fleming was born on a farm near Darwell on August 6 1881. He got his early education in the village. ठीक है जी। At 10 he went to Darwell school. आगे क्या कहता है? At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 12 साल की उम्र में he joined Kilmarnock Academy. Kilmarnock Academy. KIL किल MAR मार किलमरनाक NOC के किलमरनाक अकेडमी. किलमरनाक अकेडमी. किलमरनाक अकेडमी. किलमरनाक अकेडमी. किलमरनाक अकेडमी. किलमरनाक अकेडमी. किलमरनाक अकेडमी क्या कहता है? At 12 he joined Kilmarnock Academy. He joined Kilmarnock Academy. At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 12 he joined Kilmarnock Academy. 12 साल की उम्र में उसने Kilmarnock Academy ज्वाइन कर ली. At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 12 he joined Kilmarnock Academy. क्या कहता है? Fleming was born on a farm near Darwell. Fleming was born on a farm near Darwell on August 6 1881. ठीक है। He got his early education in the village. He got his early education in the village. ठीक है। He got his early education in the village. At 10 he went to Darwell school. At 10 he went to Darwell school. At 10 he went to Darwell school. At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 12 he joined Kilmarnock Academy. क्या कहता है? Fleming was born on a farm near Darwell. ठीक है जी। On August 6 1881. He got his early education in the village. He got his early education in the village. At 10 he went to Darwell school. At 10 he went to Darwell school. ठीक है जी। At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 12 he joined Kilmarnock Academy. आगे क्या कहता है? At 14 14 साल की उम्र में At 14 he went to London. 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 At 14 he went to London. वो लंदन चला गया। 14 साल की उम्र में वो लंदन चला गया। And studied there. स्टडी के साथ ED लगाएं। Studied there and studied there. यहाँ इसने स्टडी के बाद ना वो दायरे का नाम लिखा हुआ है, देर नहीं लगाया हुआ बल्कि दायरे का नाम लिखा है। आगे भी 1-2 लाइन लिखी है तो उससे सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी बड़ा हो जाएगा, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, एग्जामिनर की डिमांड भी नहीं होती। तो आप स्टडी के बाद बस देर लगा दें तो जुमला यहीं पे एंड करें और इतना काफ़ी है आंसर। ठीक है। At 14 he went to London and studied there. At 14 he went to London and studied there. At 14 he went to London. At 14 he went to London. He went to London and studied there and studied there and studied there. At 14 he went to London and studied there. At 14 he went to London and studied. स्टडी के साथ ed लगा हुआ है। At 14 he went to London and studied there and studied there. दोबारा पढ़ते हैं। कहता है Fleming was born on a farm near Darwell. Fleming was born on a farm near Darwell on August 6 1881. Fleming was born on a farm near
Darwell on August 1881. ठीक है. He got his early education in the village. He got his early education in the village. At 10 he went to Darwell school. At 10 he went to Darwell school. At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 12 he joined Kilmarnock Academy. ठीक है जी. At 14 he went to London and studied there. And at 14 he went to London and studied there. At 14 he went to London and studied there. क्या कहता है? Fleming was born on a farm near Darwell on August 6, 1881. He got his early education in the village. At 10 he went to Darwell school. At 12 he joined Kilmarnock Academy. ठीक है जी. At 14 he went to London and studied there. क्या कहता है? Fleming was born on a farm near Darwell. ठीक है जी. On August 6, 1881 he got his early education in the village. ठीक है जी. At 10 he went to Darwell school. At 12 he joined Kilmarnock Academy. At 14 he went to London and studied there. अगला सवाल है, describe how Fleming discovered penicillin. कहता है describe, बयान करें, how Fleming discovered penicillin. Fleming ने किस तरह पेनिसिलिन दरियाफ्त की. तो जवाब पढ़ते हैं. कहता है in 1928 1928 में फ्लेमिंग वाज ग्रोविंग. फ्लेमिंग परवरिश कर रहा था कॉलोनीज ऑफ जर्म COLONIES कॉलोनीज. फ्लेमिंग वाज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ जर्म. कहता फ्लेमिंग वाज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ जर्म. फ्लेमिंग वाज ग्रोइंग, जो फ्लेमिंग था वो परवरिश कर रहा था कॉलोनीज ऑफ जर्म, मुख्तलिफ इकसाम के जरासीम की. ऑन द कल्चर प्लेट पर कहता फ्लेमिंग वाज ग्रोविंग कॉलोनीज ऑफ जर्म. फ्लेमिंग वाज ग्रोविंग कॉलोनीज ऑफ जर्म ऑन द कल्चर प्लेट. फ्लेमिंग वाज ग्रोविंग colonies of germ on the culture plate. Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. क्या कहता है? In 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. क्या कहता है? Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. क्या कहता है? In 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. कहता है in 1928 Fleming was growing colonies of germ COLONIES colonies of germ on the culture plate. कहता है in 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. A piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. Came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. Came flying, fly उड़ना होता है. कहता a piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. कहता है विंडो में से एक फंगस का जो वो था पीस था वो उड़ता हुआ आया. A piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. दोबारा पढ़ते हैं. 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. In 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. A piece of fungus came flying from the window. A piece of fungus came flying from the window. क्या कहता है? Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. A piece of fungus came flying from the window. It dropped on the plate. और वो प्लेट पर गिर गया. It dropped on the plate.
ड्रॉप होता है उसी के साथ ईडी लगा हुआ है। इट ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट, इट ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट क्या कहता है, इट ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट। फ्लेमिंग, बात दोबारा पढ़ते हैं। इन 1928 फ्लेमिंग वाज ग्रोविंग colonies of germ on the culture plate. In 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate. A piece of fungus came flying from the window, a piece of fungus came flying from the window, ठीक है। It dropped on the culture plate, it dropped on the culture plate, it dropped on the culture plate क्या कहता है। In 1928 Fleming was growing colonies of germ on the कल्चर प्लेट क्या कहता है। इन 1928 फ्लेमिंग वाज ग्रोविंग कॉलोनीज ऑफ जर्म ऑन द कल्चर प्लेट। अ पीस ऑफ फंगस केम फ्लाइंग फ्रॉम द विंडो, अ पीस ऑफ फंगस केम फ्लाइंग फ्रॉम द विंडो। इट ड्रॉप्ड ऑन द कल्चर प्लेट, इट ड्रॉप्ड ऑन द कल्चर प्लेट क्या कहता है। इन 1928 फ्लेमिंग वाज ग्रोविंग कॉलोनीज ऑफ जर्म ऑन द कल्चर प्लेट, ठीक है। अ पीस ऑफ फंगस केम फ्लाइंग फ्रॉम द विंडो, इट ड्रॉप्ड ऑन द कल्चर प्लेट। आगे क्या आपका होता है। एट वंस फॉरन, एट वंस फॉरन, एट वंस, at once the germs around the fungus, the germ around the fungus, the germs around the fungus began to disappear, began to disappear, began to disappear। वो disappear होना, खत्म होना शुरू हो गए। कहता है at once फौरन the germs around the fungus, जो फंगस के इर्द गिर्द जर्म्स थे began to disappear, वो खत्म होना शुरू हो गए। क्या कहता है, कहता है at once the germs around the fungus, at once the germs around the fungus, at once the germs around the fungus, 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 around the fungus, around the fungus began to disappear, began to disappear, began to disappear। क्या कहता है। at once the germs around the fungus began to disappear, the germs क्या कहता है। at once the germs around the fungus began to disappear, began to disappear क्या कहता है। at once the germs around the fungus began to disappear, began to disappear, began to disappear। दोबारा पढ़ते हैं। in 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate क्या कहता है। in 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate। A piece of fungus came flying from the window, a piece of fungus came flying from the window, it dropped on the plate, it dropped on the plate, it dropped on the plate। तो फिर क्या हुआ। at once the germ around the fungus, at once the germ around the fungus began to disappear, began to disappear, began to disappear क्या कहता है। at once the germ around the fungus began to disappear क्या कहता है। in 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate। A piece of fungus came flying from the window, it dropped on the plate, it dropped on the plate, ठीक है जी। at once the germs around the fungus, at once the germs around the fungus began to disappear, began to disappear। आगे क्या कहता है। Fleming called it penicillin, Fleming called it penicillin, Fleming ने इसको पेनिसिलिन का नाम दिया। Fleming called it penicillin, 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 Fleming called it penicillin। पेनिसिलिन का लफ्ज़ सवाल में भी है। Fleming called it penicillin, Fleming called it penicillin, Fleming called it penicillin, penicillin PENICILLIN, Fleming called it penicillin, Fleming called it penicillin। दोबारा पढ़ते हैं। in 1928 Fleming was growing colonies of germ, in 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate। a piece of fungus came flying from the window, a piece of fungus came flying from the window, it dropped on the plate, it dropped on the plate, it dropped on the plate। at once the germs around the fungus began to disappear, Fleming called it penicillin, Fleming called it penicillin, Fleming called it penicillin, Fleming called it penicillin। क्या कहता है। in 1928 Fleming was growing colonies of germ on the culture plate। a piece of fungus came flying from the window, a piece of fungus came flying from the window, it dropped on the plate, it dropped on the plate।
at once the germs around the fungus, at once the germs around the fungus, at once the germs around the fungus began to disappear, at once the germs around the fungus began to disappear. Fleming called it penicillin, दोबारा पढ़ते हैं, कहता है in 1928 Fleming was growing colonies of germ, ठीक है, on the culture plate a piece of fungus came flying from the window, it dropped on the plate, at once the germs around the fungus began to disappear. Fleming called it पेनिसिलन, फ्लेमिंग कॉल्ड इट पेनिसिलन। क्या कहता है 1928 फ्लेमिंग वाज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ जर्म ऑन द कल्चर प्लेट, ठीक है जी। अ पीस ऑफ फंगस केम फ्लाइंग फ्रॉम द विंडो, इट ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट, एट वंस द जर्म्स अराउंड द फंगस बिगेन टू डिसअपीयर, फ्लेमिंग कॉल्ड इट पेनिसिलन। अगला सवाल है, कहता है इन व्हाट रिस्पेक्ट इज पेनिसिलन बेटर देन अदर केमिकल एंटीसेप्टिक। कहता है जो पेनिसिलन है, जो पेनिसिलिन है, वो दूसरे एंटीसेप्टिक से किस तरह बेहतर है। तो जवाब पढ़ते हैं, कहता है कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, ये लफ्ज़ सवाल में भी है, केमिकल एंटीसेप्टिक, ठीक है। अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक। क्या कहता है, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, क्या कहता है, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, क्या कहता है, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, हार्म्स द वाइट सेल ऑफ द बॉडी, नुकसान पहुंचाती है वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के वाइट सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। क्या कहता है, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, कार्बोलिक एसिड and other chemical antiseptic harms the white cell of the body, harms the white cells of the body, harms the white cells of the body, harms the white cell of the body, harm, HARM, harms the white cells of the body, harms the white cells of the body, harms the white cell of the body, harms the white cells of the body, harms the white cells of the body। क्या कहता है, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक हार्म्स द वाइट सेल ऑफ द बॉडी, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स हार्म्स द वाइट सेल ऑफ द बॉडी, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स हार्म्स द वाइट सेल ऑफ द बॉडी, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स harms the white cell of the body, harms the white cell of the body, harm the white cell of the body, harm, HARM, harm the white cell of the body। आगे क्या कहता है, while penicillin does not harm them, 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 while penicillin does not harm them। क्या कहता है, while penicillin पेंसिलिन कहता है, लेकिन जो पेंसिलिन है does not harm them, कहता है while penicillin does not harm them, दोबारा पढ़ते हैं, कहता है कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, हार्म्स दी, हार्म एस नहीं लगा हुआ, गलती से बोल जाता हूँ, हार्म दी वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी, हार्म के साथ एस नहीं लगा हुआ, बाकी उनके साथ सेल्स के साथ तो लगा हुआ है, हार्म दी वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी, हार्म दी वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। वाइल पेनिसिलिन डज नॉट हार्म देम, क्या कहता है, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक,
antiseptic, harms the white cell of the body, harms the white cell of the body, while penicillin does not harm them, while penicillin does not harm them, while penicillin does not harm them, while penicillin does not harm them. क्या कहता है? Carbolic acid and other chemical antiseptic harms the white cells of the body, while penicillin does not harm them, while penicillin does not harm them. क्या कहता है? Carbolic acid and other chemical antiseptic harm the white cell of the body. क्या कहता है? Carbolic acid and other chemical antiseptic harm the white cell of the body, while penicillin does not harm them, while penicillin does not harm them. Therefore it is better than other chemical antiseptic, therefore it is better than other chemical antiseptic, therefore it is better, इसलिए ये बेहतर है than other chemical antiseptic, दूसरे chemical antiseptic से, other chemical antiseptic का लफ्ज़ सवाल में भी है. It is better, कहता है therefore it is better than other chemicals antiseptic, than other chemical antiseptic, therefore it is better 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 than other chemical antiseptics, therefore it is better than other chemical antiseptics, therefore it is better than other chemical antiseptics. दोबारा पढ़ते हैं. कहता कार्बोलिक एसिड and other chemical antiseptics, carbolic acid and other chemical antiseptics harm the white cells of the body, carbolic acid and other chemical antiseptics harm the white cell of the body. Therefore, अच्छा जी, while penicillin does not harm the, while penicillin does not harm them. क्या कहता है? Carbolic acid and other chemical antiseptics harm the white cells of the body, while penicillin does not harm them, therefore it is better. कौन सी चीज़ बेटर है? ये पेनिसिलिन. therefore it is better than other chemical antiseptic, 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 therefore it is better than other chemical antiseptics, therefore it is better than other chemical antiseptics. क्या कहता है? कहता है कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स harms the white cells of the body, while penicillin does not harm them, therefore it is better than other chemical antiseptic, therefore it is better than other chemical antiseptic, therefore it is better than other chemical antiseptic. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक harms the white cell of the body, while पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन का लफ्ज़ भी सवाल में मौजूद है. while penicillin does not harm them, therefore it is better than other chemical antiseptic, therefore it is better than other chemical antiseptic, therefore it is better than other chemical antiseptic. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक हार्म द वाइट सेल ऑफ द बॉडी, while penicillin does not harm them, therefore it is better than other chemical antiseptic, therefore it is better than other chemical antiseptic. क्या कहता है? कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक हार्म द वाइट सेल ऑफ द बॉडी, while penicillin does not harm them, therefore it is better than other chemical antiseptic. क्या कहता है? कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल antiseptic harm the white cell of the body, while penicillin does not harm them, therefore it is better than other chemical antiseptic. यकीनन तमाम क्वेश्चन आंसर आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे. अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर के सुनने से, वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो, उनको भी फ़ायदा हो. मैंने इस लेक्चर में आधे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कुल 12 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, इस लेसन के, तो मैंने 6 पढ़ाए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बाकी 6 पढ़ेंगे. मुकम्मल क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ाए, बच्चे बोर हो जाते हैं, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, तो इसलिए
नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 6 पढ़ेंगे। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।